Hi, hello. Welcome back to my YouTube channel. I am Chidanand, a final year BMS student. In previous class, we discussed Swarasa, Kalka, Kvata and their upakalpana. In today's class, we discuss about fourth kalpana among Panchavidha Kashaya kalpana, that is Hima kalpana. That is Hima kalpana. It means cold infusion. Cold infusion. It is one among the Panchavidha Kashaya Kalpana and it is less concentrated than Swarasa, Kalka and Kvata. It is less concentrated and lighter than Swarasa, Kalka and Kvata Kalpana. Definition or method of preparation. Definition or method of preparation of Hima Kalpana. क्षुण्णं द्रव्यफलं सम्यक् षडबीनीरफलैप्लुतं निशोषितं हिमः स्यात् तथा शीतकषायकः. The first line says that क्षुण्णं द्रव्यफलं सम्यक्. द्रव्य है ना, ड्रग कितने लेने का, वन पार्ट ऑफ द ड्रग इज टेकन एंड षडबी नीरफलैप्लुतं, सिक्स पार्ट मीन्स सिक्स pala of the water is added to that. One part of the dravya is taken and six part of the water is taken and it is kept for one night under the moon rays, not sun rays. Okay, it is moon rays, means night for kept we kept for one night. Then in next morning we have to निशोषितम हिमहस. निशोषण, शोषण का फिल्टर करना है हमने क्या, वन पार्ट ऑफ द द्रव्य लेके सिक्स पार्ट ऑफ द वाटर लेके उसको इट इज केप्ट फॉर वन नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इट इज फिल्टर्ड आउट and obtained liquid, it is called as himakalpana. It is called as himakalpana. It शीत कषायकः is synonym of or पर्याय of himakalpana. शीत कषाय is पर्याय of himakalpana. Okay, here the principle used is वात में कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ था, तोय अग्नि सन्निकर्ष. यहाँ पे हिमकल्पना पे तोय सन्निकर्ष, तोय ओनली तोय, तोय मीन्स वाटर, वाटर के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है वहां पे क्या हुआ था, तोय एंड अग्नि सन्निकर्ष हुआ था. यहाँ पे क्या होता है, तोय सन्निकर्ष. ओके, सिद्धि लक्षण. अरे यार, प्रॉपर हिमकल्पना हुआ है कि नहीं किससे पता चलता है, सिद्धि लक्षण से पता चलता है. रस गंध वर्ण ऑफ द ड्रग, द फाइनली ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट हैविंग रस गंध वर्ण ऑफ द यूज्ड ड्रग्स इन द प्रिपरेशन, that is siddhi lakshana for himakalpana. And storage and shelf life, it is used in fresh condition. Okay, डोसेज कितना कितना देना है यार, हर एक कल्पना को डिफरेंट डोसेजेस बताए हैं आचार्य जी ने. ओके, अकॉर्डिंग टू शारंगधर 2 pala of the himakalpana is taken. अकॉर्डिंग टू शारंगधर कितना, 2 pala. According to Acharya Yadav ji, 1 pala. According to Acharya Yadav ji, 1 pala is taken. Okay, example for himakalpana is Dhanyaka Hima. Thus now we discuss Dhanyaka Hima in detail. Method of preparation of Dhanyaka Hima. देखो यार, श्लोक क्या बताया है, प्रातः सशर्करः, दिस इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड किसके साथ लेना है वो बताया है. पेयो हिमो धान्यक संभवः, अंतर्दाह तथा तृष्णा जयेत श्रोतो विशोधनः. दिस इज द one part of the Dhanyaka is taken, one part of the Dhanyaka is taken and to that six times of the water is added to that, 6 times of the water is added to that and kept for one night, and it is kept for one night. Next morning it is filtered and obtained liquid, it is called as himakalpana, that is called as hima. Okay, वो क्या बताया है ना, यहाँ पे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बताया है, किस टाइम पे धान्य का हिम को लेना चाहिए.
It is said as pratah sa sharkarah. It is taken in the morning with किसके साथ लेना है वो भी बताया है, स शर्करः, नॉट व्हाइट शुगर, ओके। अभी केमिकल वाला शुगर है ना, वो शुगर नहीं, अच्छे वाला ऑर्गेनिक शुगर के साथ ये क्या है ना, ये क्या है, हिम को लेना चाहिए। धान्यकम हिमा, इट इज टेकन विथ शर्करा, टेकन विथ शर्करा इन द मॉर्निंग टाइम। इफ यू वांट मोर बेनिफिट्स, you should take in morning time, okay। प्रातः स शर्करः पेयो हिमोधान्य का संभव। किस किस में ये इंडिकेट किया है, अंतर्दाह, burning sensation all over the body, inside the body, and trishna, in trishna condition, in antardaha condition, and to win over these or all condition, the dhanyaka hima is indicated. And also it does the shroto vishodhana. Shrotos means blood channels, in modern it referred as arteries, veins, etc, okay। वो क्लियर करना है तो ब्लड चैनल्स को क्लियर करना है तो धान्य का हिम को क्या कर सकते हैं, हम इंडिकेट कर सकते हैं, ओके। दिस इज ऑल अबाउट धान्य का हिमा। डोसेज कितना देना है, 2 पला, इंडिकेशन अंतर्दाह एंड श्रोतो विशोधना, एंड इन तृष्ण कंडीशन इट कैन बी इंडिकेटेड, it can be indicated, okay। Now we discuss secondary dosage forms of himakalpana. They are upakalpana of himakalpana, upakalpanas of himakalpana. They are manta kalpana, udaka kalpana, and panaka kalpana. Manta kalpana, udaka kalpana, and panaka kalpana. Mantodaka kalpana, I remembered like this, okay। Manta kalpana, first one we discuss in detail, manta kalpana. It is a semi-solid preparation. It is a semi-solid preparation where saktu mixed with ghee and cold water. Saktu is mixed with ghee and cold water and made into semi-solid form. And it is made into semi-solid form. It is known as manta. It is known as manta. We learn the shloka. It is easy to remember. Okay. Jale chatushpale shite, jale chatushpala. Jala should be taken as porpala. Porpala of the jala is taken. Jale chatushpale shite, kshunyam dravyapalam kshipet. 1 pala of the yavakuta churna dravya is taken, and pour pala of the water is taken. Which water? Cold water is taken, and it is taken in mrut patre mantayet. It is taken in पॉट, पॉट होता है ना, सॉइल से बना हुआ पॉट, उसमें लेके क्या करना है, मंथन करना है। क्या करना है, मंथना, चर्निंग करना है। उसको क्या करना है, ऐसा ऐसा चर्न करना है। चर्न करने के बाद क्या मिलता है ना, सम्यक तस्माश्च द्विपलम पिबेत। ये डोसेज फॉर्म बताए, कितना लेना है मंथ को। मंथन कल्पना में किसके साथ लेना है और कितना लेना है वो भी बताया हुआ है, ओके। 2 पला आर मेंशनड हियर। देखो सिद्धि लक्षण, देखो मंत्र कल्पना का सेम, द रस गंध वर्ण ऑफ द ड्रग शुड बी देयर इन द फाइनल प्रोडक्ट। एंड डोसेज कितना बताया है, 2 पला डोसेज बताया है, 2 पला डोसेज बताया है। एंड प्रिंसिपल मंथना, मंथन मीन्स चर्निंग करना है, चर्न। स्टोरेज एंड शेल्फ लाइफ, इट इज यूज्ड इन द fresh form, instantaneous used, okay। Example for mantha kalpana is karjuradi mantha, karjuradi mantha। Ingredients used in karjuradi mantha, they are karjura, dadima, draksha, tintidika, amblika, amalaki, parushaka, kruto mantah, sarvamadhya vikaran, sarvamadhya vikaran। The here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ingredients are mentioned here. How many? 7 ingredients, okay। In karjuraji mantha, how many ingredients are mentioned? 7 ingredients are mentioned in karjuradi mantha. They are taken as 1 pala, means each one is 1 pala, okay।
देन 4 टाइम्स अप, वो क्या बनाने का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलूंगा अभी मैं, क्या बोलूंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. You have to take these 7 ingredients and made into yavakuta churna. Yavakuta churna means small powder like form. Small powder like form होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम, यवाकूटा चूर्ण बोलते हैं. ओके, 7 ड्रग्स को पहले क्या करने का, यवाकूटा चूर्ण पाउडर बनाने का. उसके बाद the 4 times of the water is added to that, 4 times of water is added to that, and it is मंथना, चर्ड वेल. क्या करना है, चर्निंग, चर्निंग करना है. चरने के बाद इट इज फिल्टर्ड एंड द ऑब्टेन्ड लिक्विड इट इज कॉल्ड एज खर्जूरादि मंथा. ऑब्टेन्ड लिक्विड इट इज कॉल्ड एज खर्जूरादि मंथा. दो चीज बताइए, टू पला खर्जूराज मंथा ना, खर्जूरादि मंथा, इट शुड बी इन टू पला, इंडिकेटेड इन सर्व मध्य विकारा. सर्व मध्य विकारा, कुछ तो अल्कोहल का प्रॉब्लम्स है तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट सेकंड उपकल्पना ऑफ द हिमा कल्पना, दैट इज उदक कल्पना और तंडुलोदक. उदक कल्पना और तंडुलोदक. रिमेंबर द रेशियो. रेशियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. In Hima Kalpana, we used the ratio of 1:6. Here, we used the ratio of 1:4 in Mantha Kalpana. Here in Udaka Kalpana, I will tell now. Okay, it is the liquid obtained by rubbing the rice in cold water. Rice in cold water in specific ratio लेके उसको क्या करना है, रब्ड इन द कोल्ड वाटर. रब्ड इन द कोल्ड वाटर, दैट इज कॉल्ड एज उदक कल्पना. दैट इज कॉल्ड एज उदक कल्पना. खंडितम तंडुल फलम जले अष्टगुणिते क्षिपेत. यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या बताता है, 1 pala of the tandula. 1 pala of the tandula means rice is taken. It is made into powder form and 8 times of the water is taken. Ashtagunite, 8 times of the water is taken and rubbed, vigorously rubbed. Bhavayitva jalagrayam deyam sarvatra karmasu. Method of preparation: 1 pala of the dravya is taken, 8 pala of the water is taken. It is rice is made into yavakuta form and 8 times of the water is added to that and rubbed properly, and it is filtered and obtained final product. It is called as tandu lodaka. It is called as tandu lodaka. Here 1 pala of the tandula rice is taken, water is 8 pala is taken. Method of preparation is rice is grounded and rubbed in cold water. That obtained final product is called as tandu lodaka. Okay, uses is very 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 important for MCQ question. दिस यूज है ना MCQ के लिए बहुत बहुत और वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तंडुलोदका, इट इज यूज्ड एज अनुपाना. इट इज यूज्ड एज अनुपाना इन पुष्यानुग चूर्ण. पुष्यानुग चूर्ण में तंडुलोदका क्या हो सकता है, अनुपाना. इट इज तंडुलोदका यूज्ड एज अनुपाना इन पुष्यानुग चूर्ण. दिस इज अबाउट उदक कल्पना. ओके, now we discuss the last upakalpana of Hima Kalpana. The last upakalpana of Hima Kalpana, that is पानक कल्पना. पानक कल्पना सबको पसंद है यार, नींबू पानक. ओके, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पानक कल्पना: फलम अम्ल अनम्लम व शीतांबुमर्दितम सीता मरीच संयुक्तम पूतम स्यात् पानकम वरम. The first line says that phala ambla anambla. The liquid preparation, it is prepared with ambla and anambla. Ambla and anambla. It is done mardana in cold water. Mardana in cold water. Then at the end, Sita, Maricha and Sanyukta is added to that, and
it is called as panaka. It is called as panaka kalpana. Principle used here is mardana and galana. Mardana and galana. सिद्धि लक्षण सेम, रसागंधा वर्ण ऑफ द यूज्ड ड्रग्स, कौन सा ड्रग्स यूज किया है ना उसका क्या होना चाहिए, रसागंधा एंड वर्ण तो होना ही होना चाहिए. ओके. स्टोरेज एंड सेल्फ, इट इज यूज्ड इन इंस्टेंटेनियस एंड इट इज यूज्ड इन फ्रेश कंडीशंस. एग्जांपल्स फॉर पानक कल्पना, दे आर चिंचा पानक एंड चंदन पानक. चिंचा पानक एंड चंदन पानक. ओके. रेफरेंस इज अनुभूत योग. रेफरेंस दोनों का क्या है, अनुभूत योग ही है. ओके. देखो इंग्रेडिएंट, चिंचा पानक बनाना है तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. चिंचा फ्रूट मीन्स टमरिंड, राइफन्ड होना चाहिए वो, राइफन्ड होना चाहिए वो. चिंचा पानक कितने लेने का, 100 ग्राम ऑफ द टमरिंड लेने का. उसके बाद शुगर 200 ग्राम एंड वाटर इज टेकन एज 400 ml. 400 ml. पहले मेथड ऑफ एंड सैंधव लवण, जीरक चूर्ण, मरीच चूर्ण 10 ग्राम ईच लेने का. दीज आर इंग्रेडिएंट्स फॉर चिंचा पानक. पहले है ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चिंचा पानक को किस पे मिलाना है, वाटर में समटाइम्स भिगा के रखना है, भिगा के रखना है. बाद में वो फिल्टर करके उसमें क्या करने का, शुगर ऐड करने का. शुगर ऐड करके क्या करने का, मर्दना. वी डू द मर्दना. देन एट लास्ट सैंधव लवण, जीरक चूर्ण एंड मरीच चूर्ण आर added at the end. Okay. Then it is used as चिंचा पानक. एक बार मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बनाता हो यार, बहुत अच्छा बनाता. ओके. डोसेस कितना देना है, 50 ml मीन्स 1 पला. एंड अनुपाना मेंशनड हियर इज वाटर एंड शुगर इज यूज्ड एज अनुपाना इन चिंचा पानक. इंडिकेशन मंदाग्नि, अरे यार तुम्हारा डाइजेस्टिव पावर बहुत वीक है तो तुम चिंचा पानक ले सकते हो. अरुचि ने, अरे यार टंग को टेस्टी नहीं है यार, कुछ भी नहीं हो रहा तो ये ले लो. कौन सा, चिंचा पानक को. अरुचि टेस्टलेसनेस. वमना एंड तृष्णा, इन दीज कंडीशन यू कैन टेक द चिंचा पानक. नॉर्मल भी ले सकते हो, पी सकते हो यार, उसमें क्या है. चंदन पानक. नेक्स्ट वन इज चंदन पानक. इंग्रेडिएंट्स हियर आर श्वेत चंदन चूर्ण. श्वेत चंदन चूर्ण कितना लेने का, 100 ग्राम लेने का. शुगर 250 ग्राम, वाटर 400 ml एंड निम्ब रस इट इज टेकन एज 10 ml. 10 ml. पहले श्वेत चंदन को 400 ml ऑफ वाटर में भिगा के रखना. बाद में उसको फिल्टर करके उसमें क्या ऐड करने का, sugar is added to that. Then it is heated over mandagni. It is heated over mandagni and the paka is done. When it is paka is done, then the heating system is stopped. At the end you add the nimba rasa. Nimba rasa. That is called as chandana panakam. It is indicated in daha, mutra vikara and trishna. Daha means burning sensation, mutra vikara means any renal disorders, and trishna means thirsty. In these conditions you use the chandana panaka. This is all about Hima Kalpana. Okay. If you have any doubts, comment below. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लो. फॉलो फॉर मोर आयुर्वेद कंटेंट. फॉर हैंड रिटन नोट्स ज्वाइन माय टेलीग्राम. थैंक यू. Now we discuss the fifth among Panchavidha Kashaya Kalpana, that is Phanta Kalpana. Phanta Kalpana, it means hot infusion. Hot infusion, English meaning. Okay. Phanta Kalpana is prepared by putting smoothly powdered drug into hot water and rubbed carefully. The obtained liquid is called as Phanta.
panta. The coarsely powdered drug, coarsely powdered drug is taken in hot water and rubbed carefully. The obtained liquid that is called as panta. That is called as panta. Okay. Method of preparation. शून्ये द्रव्यफले सम्यक् जलमुष्टं विनिक्षिपेत् मृत्पात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु श्रावयेत् पटात् तस्य चूर्णद्रवः पाण्टस्तन्मनां द्विपलोन्मितं सीता मधु गुडादींश्च क्वातावतत्र निक्षिपेत्. The shlokas tells that one pala of the dravya is taken. It is made into coarse powder, smooth powder, and samyak jalam ushnam. Ushna jala is taken. How much ushna jala it has to be taken? They said as kudavan mam. One kudava it is equal to 4 pala. One kudava is equal to 4 pala. One pala of the coarsely powder is taken and 4 pala of the ushna jala is taken in mrut patra. It is taken in pot. It is taken in soil pot. Okay. Tatastu sravayet patat. Tatastu sravayet patat. Tasya churna dravaha. The obtained liquid it is called as panta. It has paryaya of churna drava. Churna drava is synonym paryaya of panta. Pantastanmanam dvipalonmitam. Here the dosage also mentioned dvipala, 2 pala of the panta is taken. Okay. Sita Madhu Gudadimscha Kvata Tatra Nikshipit. Here Prakshepaka Dravya are also mentioned. They are Sita, Madhu and Guda. Sugar, honey and jaggery is mentioned as Prakshepaka Dravya. Okay. Here Paryaya of the Pandakalpana is Churna Drava and Prakshepaka Dravya are Sita, Madhu and Guda. Siddhi Lakshana, the rasagandha varna of the used drugs and dosage is 2 pala. Here only mentioned. Anupana not required because it is in the liquid form. Storage and shelf life it is used in the fresh instantaneous used. Okay. The examples for Panta Kalpana are Panchakola Panta and Madhuyashti Panta. Panchakola Panta and Madhuyashti Panta are examples for Panta Kalpana. Method of preparation. Pippali Mula Sunti Chavya Chitrakaihi. Pippali Mula Sunti Chavya Chitrakaihi. Panchakolamiti Syat Rucham Deepana Pachanam. Anaha Pliha Gulmascha. Sula Shleshmo Dara Upaham. Means it tells that here the ingredients used in Panchakola Panta are Pippali Mula, Shunti, Chavya and Chitraka and hot water, Ushna Jala. Okay. Ushna Jala is taken as 4 part. Okay. Pippali Mula, Shunti, Chavya, Chitraka each taken as 1 part. Means how many parts? 1, 2, 3, 4, 5. Pancha. 5 drugs are used here. It is total 5 part. 4 part of the Ushna Jala means 20 part of the Ushna Jala is taken and it is rubbed vigorously and carefully and later it is filtered and that is called as Panchakola Panta. That is called as Panchakola Panta. Okay. The karma, what are the actions of the Panchakola Panta means Deepana and Pachana. It acts as digestive and appetizer. It acts as digestive as well as appetizer. It is the action of Panchakola Panta. In which are all conditions you indicate the Panchakola Panta means Anaha, Pliha, Gulma, Shula, Shleshma Udara. Is in these conditions you can indicate the Panchakola Panta. Okay. The next one is Madhuyashti Panta. Madhuyashti it is taken as 1 part and Ushna Jala means hot water it is taken as 4 part and it is Madhuyashti is coarsely powder, then hot water is added and it is rubbed vigorously, then it is filtered, that is called as Madhuyashti Panta. It is used as laxative and emesis.
The upakalpana of the Phanta kalpana, that is arka kalpana. Upakalpana, the secondary dosage form of the Phanta kalpana, that is arka kalpana. Okay. Now we discuss in detail. Arka kalpana. It is a liquid preparation. It is a liquid preparation obtained by distillation method. Obtained by distillation method of certain liquids or drugs soaked in water by using arka yantra. अर्क यंत्र से अर्क यंत्र का हेल्प से क्या बनाते हैं, हम अर्क को बनाते हैं, अर्क को बनाते हैं. द ड्रग्स आर मेथड ऑफ प्रिपरेशन. द ड्रग्स आर क्लीन्ड एंड कोर्सली पाउडर. पहले क्या करने का, ड्रग्स को क्लीन करने का, बाद में कोर्सली पाउडर करने के. सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द ड्रग्स फॉर सोकिंग ओवरनाइट. फॉर वन नाइट छोड़ने का, वो सोक करने के लिए. एंड ऑन नेक्स्ट डे इट इज फिल्ड टू द अर्क यंत्र एंड रिमेनिंग वाटर इज एडेड एंड बॉइल्ड. द वेपर इज कंडेंस्ड. The vapor is condensed and collected in the receiver. That is called as arka kalpana. That is called as arka kalpana. Okay. Principle here used is distillation. Siddhi lakshana same. Rasagandha varna of the dominant drug. Storage. It is stored in glass bottles, airtight containers, and it is shelf life of the arka kalpana is 1 year. Up to 1 year you can use. Examples for arka kalpana that are Yavani arka and Gulaba arka. Yavani arka and Gulaba arka. Ingredients used here is 1 part of the Yavani, water for soak 2 part, and water for arka 4 part is added. Same as the general method. And Yavani arka dosage कितना बताया है, 10 to 25 ml of the Yavani arka is taken in the conditions of Pachana, Rucha, Deepana and Trikshulahara. Trikshulahara means where the 3 organs are meet. They, that region is called as Trikshulahara. Okay. Now Gulaba arka. Next one is Gulaba arka. Rose petals, it is taken as 1 part, and water means taken as 10 part. Then it is same as general. You prepare the Gulaba arka. Yet the concentrated of 70% you have to stop, and it is collected as Gulaba arka. It is used for complexion of the skin. Okay. This is all about the Panchavidha Kashaya Kalpana. Kalpana Nirmana 1. In this Kalpana Nirmana 1, total 15 marks surely comes in the exam. If you have any doubts, comment below. Like, comment, share. Video अच्छा लगा तो follow for more Ayurveda content. Thank you. See you in the next video. Okay.